करते हैं, ताकि वो चेक करें कि आप जो है मतलब ट्रू ऑनेस्ट हो या नहीं हो। क्योंकि ऐसे होता है कि आपके पास 30 मिनट्स में आपने 100 MCQs को सॉल्व करना होता है, तो आपके पास इतना सोचने का टाइम नहीं होता। जो फर्स्ट थॉट आपके माइंड में आता है आप फौरन उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, और फिर आपने बबल शीट में 100 ऑप्शंस को फिल भी करना होता है। तो आप इस तरह करें कि पहले से थोड़े से ऐसे एमसीक्यूज को रीड आउट कर लें कि नम्स जो है वो अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस देता है, ताकि आपको थोड़ा प्रिपेयर्ड हो कि हमने किस तरह उस पोर्शन को टैकल करना है। तो जब पार्ट ए के साथ आपने फिल कर लिया, बबल शीट फिल कर लिया, उसके बाद आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट मिलेगा, उसकी स्टेटमेंट्स को रीड करें, फौरन उसको मार्क करें और बबल शीट में फिल कर दें। क्योंकि 100 MCQs हैं, तो आपके पास बाद में एंड में टाइम नहीं होगा कि आप पहले उनको सोचें उन पर कि हाँ मैंने कैसे करना है, मैं सुसाइडल फील करता हूँ या नहीं। अगर वो आपको कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं और हॉस्पिटल में आपके पास कोई पेशेंट आया हुआ है, तो क्या आप किस चीज को प्रायोरिटी देंगे? तो आपने फौरन फौरन सोचना होता है और फौरन फौरन फिल करना होता है। उसके बाद हमारे पास आता है, अब जैसे हमारे पास नम्स एमडीकैट जो है वो हमारे पास 3 सितंबर को है, तो आपके पास अभी 3 to 4 डेज है। इसमें आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिव्यू गाइड्स हैं, लर्निंग लिस्ट है, प्रीमेड बाय मेडएंगल की रिव्यू गाइड्स एंड लर्निंग लिस्ट। इनको आप यूज करोगे क्योंकि आप अब 3 to 4 डेज में आप टेक्स्ट बुक्स को गो थ्रू नहीं कर सकते। जैसे बायोलॉजी में हमारे पास डाटा बेस या रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको आप पूरी टेक्स्ट बुक को रीड नहीं कर सकते। सो लर्निंग लिस्ट ऑफ फेडरल बोर्ड एंड लर्निंग लिस्ट ऑफ पंजाब बोर्ड, इनको आप गो थ्रू करोगे, क्योंकि जो भी हमारी बुक्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं या साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह, वो सारी उन लर्निंग लिस्ट में कंपाइल्ड है। आपको उस टेक्स्ट बुक को बिल्कुल रीड करने की जरूरत ही नहीं। आप लर्निंग लिस्ट से गो थ्रू करोगे तो आपने सारा टेक्स्ट बुक का जो भी डाटा है उसको आपने रिवाइज कर लिया होगा। उसके बाद हमारे पास फिजिक्स के फॉर्मूला है, तो वो जो रिव्यू गाइड बाय प्रीमेड बाय मेडएंगल है, उनमें सारे हमने कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, उन सबको हमने कंपाइल किया हुआ है। केमिस्ट्री के लिए रिएक्शंस, ग्राफ्स वगैरह, वो सारी चीजें कंपाइल है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को रिवाइज करने के लिए आपने रिव्यू गाइड्स को गो थ्रू करना है। उसके बाद हमारे पास जो है प्रीमेड बाय मेड एंगल पे नम्स के पास पेपर्स हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस के मॉक एग्जाम्स हैं, उनको आप सॉल्व करोगे टाइम्ड मोड में। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप जो है प्रीमेड बाय मेड एंगल पे उसका स्मार्ट सेट ओपन करोगे और वहां से उसकी प्रैक्टिस करोगे, ताकि आपको जो वो कॉन्सेप्ट है फौरन रिवाइज हो जाए। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी टेक्स्ट बुक को खोलो और पूरा वो फॉर्मूलाज रिवाइज करो, डाटाबेस सारी वो रिवीजन करो। तो आप रिकमेंडेड यही है कि आप जो है हाई यील्ड स्मार्ट सेट्स को ओपन करो और वहां से जो है अपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। ये हमने प्रैक्टिस रिसोर्सेज की बात की। इसमें हमारे पास जो है लास्ट 2 डेज में एसएलपी पास्ट पेपर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नम्स की जो टेस्ट होते हैं, आप उनके पास पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि मोस्टली एमसीक्यूज हैं वो पास पेपर से ही जो है रिवाइज हो रहे होते हैं। कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो हमारे पास फेडरल और बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स में भी गिवन नहीं होते, लेकिन वही कॉन्सेप्ट जो है वो दोबारा दोबारा पास पेपर से रिपीट हो रहे होते हैं। तो पास पेपर्स तो हाईली रिकमेंडेड है रिविजन के लिए लास्ट 2 से 3 डेज में। मॉक एग्जाम्स, रिव्यू गाइड एंड लर्निंग लिस्ट, इन 4 रिसोर्सेज को आप यूज करोगे तो आपकी ऐसी रिविजन हो जाएगी कि आपकी 95% प्लस स्कोर आएगा नम्स एग्जाम में। उसके बाद आते हैं टाइम मैनेजमेंट। अब नम्स एग्जाम जो है उसके पार्ट ए है और पार्ट बी है। इन दोनों पार्ट को कैसे टाइम मैनेजमेंट की जाए, कैसे अटेम्प्ट किया जाए कि हम टाइमली बबल शीट भी फिल कर लें दोनों की, और हमारे पास जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, कोई क्वेश्चन जो है वो लेफ्ट आउट ना हो। तो पहले आपको ऐसे होता है कि जब आप एग्जाम हॉल में टाइम स्टार्ट होता है, आपको जो है पार्ट ए का क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, उसके साथ आपको पिंक कलर की बबल शीट दी जाती है। इन दो बबल शीट में डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो पार्ट ए के क्वेश्चंस हैं उनके 4 आंसर चॉइसेस होती हैं, और जो पार्ट बी साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसकी 5 आंसर चॉइसेस होती हैं। तो पहले जैसे ही आपको पार्ट ए मिलेगा, मैंने पर्सनली ये किया था कि मैंने पहले फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्योंकि उसमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है और कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो फिर हम जो है उनको पहले सॉल्व कर लें, तो फिर हमारे पास जो है बाद में कैसे है बाकी स्मूथली चलता है। तो मेरी सीक्वेंस थी कि मैंने फिजिक्स पहले किया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड देन इंग्लिश। तो आपने जैसी एक क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर लिया तो उसके साथ ही आप बबल शीट भी उसकी फिल कर लो। जो क्वेश्चन पे आपको प्रॉब्लम है उनको बबल शीट में पेंसिल से मार्क कर लो कि ये मुझे क्वेश्चन नहीं आते, मैं इनको एंड पे करूंगा। ठीक है, पहले आपने फिजिक्स कर लिया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश जब सारे कर लिए, उसके बाद बबल शीट में आपके हर पोर्शन के बाद आपने उसको फिल करते जाना है। एंड के लिए बबल शीट को नहीं रखना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। उसके बाद आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट भी आना है, तो इसलिए आपको मैक्सिमम टाइम जो है वो अपना बचाना है।
तो आपने हर पोर्शन के बाद अपनी बबल शीट फिल कर लेनी है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपके लेफ्ट आउट हैं, अगर 10 है 15 है, तो उनको आप एक दफा गो थ्रू करो। आप कैलकुलेटेड, अगर आपको नहीं आता तो आप कैलकुलेटेड गेस लगाओ। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं, मतलब आपने कोई टेक्स्ट बुक में पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल, तो आप कोई एक भी आंसर चॉइस चूज कर लो और उसको मार्क करके आपने उसको बिल्कुल फिल आउट कर लेना बबल शीट को, क्योंकि इसके जो है 150 आपके एमसीक्यूज होंगे और 150 मिनट्स का ही हमारे पास टाइम होता है पार्ट ए के लिए। तो इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि हम एमसीक्यू पे बैठे रहें एक पे के हमें अभी इसको बार बार रीड आउट करूंगा तो मुझे आंसर आएगा, इतना टाइम नहीं होता। उसके बाद हमारे पास जब पार्ट ए आपका हो जाता है, वो आपसे पार्ट ए की बबल शीट ले लेते हैं, आपको पार्ट बी दे देते हैं। उसमें हमारे पास जो है 100 क्वेश्चन होते हैं और उनके लिए अलॉटेड टाइम 30 मिनट्स है। उसमें रिकमेंडेड ये है कि आप जैसे ही स्टेटमेंट को रीड आउट करते हो फौरन ही उसका आंसर आप मार्क कर लो, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब आपकी अपनी सब्जेक्टिव होता है, मतलब कि आप खुद क्या उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे, मतलब कि आपको जो है रियल लाइफ सिनेरियो दिए जाते हैं कि वो आप किस तरह उसमें बिहेव करोगे। पहले 2020 तक क्या होता था कि साइकोलॉजिकल टेस्ट की कोई मतलब आपने उसको सिर्फ पास करना होता था, उसकी कोई वेटेज नहीं होती थी मेरिट कैलकुलेशन में। और जो हमारे पास 150 पार्ट ए के एमसीक्यूज होते थे, उसी में से जो है आपके 140 या 135 आंसर आपका रिजल्ट आता था उसी में से। लेकिन अभी 2022 से ऐसे किया उन्होंने कि जो हमारे पास पार्ट ए है उसकी 95% वेटेज है टोटल रिजल्ट में, जो नम्स का हमारा रिजल्ट आता है, और जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसकी 5% वेटेज है। तो आपका जो है रिजल्ट जो आता है नम्स का, वो परसेंटेज के फॉर्म में होता है, क्योंकि वो 95% पार्ट ए से लेते हैं और 5% जो आपके साइकोलॉजिकल में। अब उनकी आई डोंट नो कि किस बेसिस पे बनी हुई है, लेकिन वो आपको मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस दिए होते हैं कि जैसे आप एमबीबीएस की डिग्री के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो आप उस सिनेरियो में एज अ डॉक्टर किस तरह आप बिहेव करोगे। तो जैसे आप बहुत बिजी हो, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत बिजी है, लेकिन आपके पास जो है हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, तो आप उसको क्या छोड़ दोगे, उसको अटेंड नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे, कंप्लीटली एग्री करोगे या कंप्लीटली डिसएग्री करोगे, या इस तरह। तो ऑब्वियसली आप कंप्लीटली डिसएग्री करोगे, क्योंकि आप डॉक्टर बनने का फिर एंट्रेंस एग्जाम क्यों दे रहे हो जब आप अपने पेशेंट को अटेंड नहीं कर सकते। तो इस बेसिस पे वो आपके जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं और उसकी मार्किंग करते हैं। ये हमारे पास टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी कि आपके 100 क्वेश्चन जो थे उनको आपने 30 मिनट्स में जैसे ही रीड आउट करना है, उसके बाद उनको मार्क करके और बबल शीट में फिल कर देना। ओके, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि ये जो है टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ओवर टू यू तुबा। Thank you so much, Zainab. I think you brilliantly explained, and those were some amazing tips and tricks, honestly. And I'm sure यहाँ बैठे जितने भी students हैं, they were actually wondering कि what is the NUM psychological test? क्योंकि अपने time पर I remember I was quite confused about this. So I'm pretty sure सबकी queries answer हो गई होंगी. But if not, then guys, like I said, towards the end there is a live Q&A session for you. Also stay tuned for that. Jot down any questions that you have. Acha, one more thing that I would like to talk about is we all always want to experience the real exam feeling, right? Before actually sitting for our exam, in order to boost our confidence, in order to assess our strengths and weaknesses. So MedAngle Premed is here for you once again. We at MedAngle Premed, like Zainab and Paul said, we have numerous mock exams lined for all of you. And like she said, ke jo aapka NUMS ka exam hota hai, it primarily revolves around your federal and Punjab board. तो हमारी अपनी वेबसाइट पर यू कैन फाइंड फेडरल एंड पंजाब बोर्ड के मॉक एग्जाम्स, जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू असेस योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। एंड आई नो इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू लॉग इन, कोई इश्यूज होंगे, सो टुडे आई एम गोइंग टू डू इट विथ यू लाइव। सो व्हाट यू हैव टू डू इज विद इन सेकंड्स जस्ट ग्रैब ऑनटू योर मोबाइल फोन एंड फॉलो ऑल दो स्टेप्स जो कि जिनके बारे में मैं अभी आपको ब्रीफ करने जा रही हूँ। First of all, you are going to open a new tab, और फिर उस पर जाकर you are going to type out this URL that I am telling you, which is premed.medangle.com/join. और जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो इट इज गोइंग टू डायरेक्ट यू टू दिस पर्टिकुलर वेब पेज। इस पर्टिकुलर वेब पेज पर आपने अपनी डिटेल्स को शेयर करना है, जैसे यू आर गोइंग टू मेंशन योर फर्स्ट नेम, उसके बाद आपका जो भी लास्ट नेम है यू आर गोइंग टू एंटर दैट।
and after doing it you are going to press next. उसके बाद आपकी जो भी valid email address है जो currently in use है, you are going to enter out that valid email address. In my case it is aishadeda89@gmail.com. तो ये करने के बाद I'm going to press next, and then it is again going to direct me to another page जिसमें मैंने अपने pre-med college के बारे में बताना है. आपका जो भी pre-med college है, in my case Fazaya Degree College, so I am going to enter Fazaya Degree College here, and after entering that college name I am going to again press next. अब next पर press करने के बाद कोई भी आपका 6 character का password आपने set करना है according to your feasibility, and after setting that password again जब आप submit click करेंगे तो it is going to direct you to a particular web page. अब submit click करने पर like you can see here कि it is directing you to this web page, तो आपके पास यहाँ option होगा click here to return to home page, तो आपने click here पर जाकर click करना है. After that again ये MedAngle Premed का dashboard है, you are going to click on menu. मेन्यू पर जाते ही आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर लॉगिन नहीं है तो आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं थ्रू योर पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो अभी आपने अपना सेट किया है. जब आप उस पर लॉगिन करेंगे तो आप इसके जरिए कोड को भी रिडीम कर सकते हैं. अब कोड रिडेम्पशन का प्रोसेस क्या है, आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट दैट एज वेल. Also do keep in mind that MedAngle Premed is absolutely free. It is free for every MedAngle student, every Premed student that is out there. तो आप MedAngle Premed को एक्सेस करके फ्री में जितने भी आपके क्वेरीज है उनको आंसर कर सकते हैं, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा मॉक एग्जाम्स को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो लाइक आई सेड यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन लॉगिन पर जाकर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन लॉगिन आपको जो है ना यहाँ पर अपनी जितनी भी डिटेल्स होंगी वो यू विल हैव टू एंटर इट. वो डिटेल्स जो अभी हम लोगों ने सेट की थी दैट वाज योर पासवर्ड, और फिर आपके पास माय मेन्यू पर जाकर हमारे पास ऑप्शन आता है दैट इज माय सब्सक्रिप्शन का. उस माय सब्सक्रिप्शन के बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यू विल बी एबल टू रिडीम द कोड जो कि मैं आपको बताऊंगी, दैट इज प्रीमेड इज फ्री. अब प्रीमेड इज फ्री कैसे लिखना है, इसको हम लोगों ने कैप्स लॉक में लिखना है, दैट इज प्रीमेड इज फ्री. एज यू कैन सी हियर ये एक फ्री कोड है एक्सेसिबल टू ऑल द प्रीमेड स्टूडेंट्स आउट देयर. अगेन अगर आप लोगों को कोई इश्यू हो, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी अटैच्ड ए QR कोड. तो अगर बहुत ज्यादा इशू है सो यू कैन जस्ट स्कैन दैट QR कोड. जैसे कि पहला QR कोड है, इट इज टू ज्वाइन नाउ. सो बाय स्कैनिंग दिस आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, एंड इफ यू नीड टू रिडीम द एक्सेस कोड जो मैंने आपको बताया दैट इज प्रीमेड इज फ्री, तो आपने उस एक्सेस कोड को स्कैन कर लेना है. सो दिस इज फॉर योर feasibility and I'm sure MedAngle Premed would greatly help you with its mock exams, with its MCQs. So guys, what are you waiting for? It is at your doorstep, absolutely free for all of you out there, so do not waste and miss out on this opportunity. So let's move on towards our next speaker for today, that is Hassan Siddiqui. Let me tell you, Hassan Siddiqui topped NUMS in Sindh. He scored 97%. So guys, you do not want to miss out on what Hassan has to say to all of you. So without wasting any second, I will hand it over to you, Hassan. Thank you so much, Suba, for the warm welcome. And Assalamu alaikum, everyone. Hello, my name is Mohammed Siddiqui. I'm a first year MBBS student at Dow Medical College, Karachi. And last year, I gave my MDCAT exam as well as my NUMS exam that I'll be talking about right now. And I had a score of 97%, as Suba mentioned. And my score in my MDCAT was 175 out of 200. Okay. So since Zainab has already talked about the tips and tricks, the resources, and the time management wala stuff, so for that reason, what I want to talk about is the technical side of the NUMS exam. Like, what is the technical stuff that you need to, remember before stepping into the examination hall on the 3rd of September? So out of everything, the first thing that I want to talk about is the NUMS versus the MDCAT exam experience. What is the exam experience like? And the first thing that comes to my mind right away is the curriculum difference. Obviously, since you guys have your exam inside 3 days now, so obviously you might be revising by now. So as we know that, and I'm pretty sure that you guys are preparing for your MDCAT as well, primarily. So MDCAT में क्या होता है? Like MDCAT में, since इस साल PMDC conduct कर रही है last year की तरह. So obviously MDCAT तो provincial होगा. So if I'm a student from Sindh, तो मैं तो सिंध की बुक्स फॉलो करूंगा, मैं सिंध टेक्स्ट बुक पढ़ूंगा. एक स्टूडेंट जो पंजाब का है तो वो पंजाब की बुक्स फॉलो करेगा. बट नम्स में ऐसा नहीं होता.
NUMS में when I was preparing for NUMS last year, when I was following on the past papers, जब मैं इस पे थोड़ी research कर रहा था, what I found out in NUMS जो है, it revolves heavily around the federal textbook board. उसमें जितने भी questions आते हैं, जो भी चीज़ वो पूछते हैं, it revolves heavily around the federal textbook board, especially the biology portion of the exam. Obviously, physics में तो it's all conceptual, chemistry maybe it's all conceptual. तो उसमें तो आप expect कर सकते हो कि किसी और book से भी आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो. But for the biology portion of the exam, make sure that you are studying from the that you're revising in whatever time that you guys have left right now. Obviously, this is the time to revise. So make sure that federal textbook board is your go-to revising book, right? Okay. So the second thing that I want to talk about in the topic of NUMS and NUMS versus MDCAT exam experience is the syllabus difference. Now, as you all know, कि PMDC का जो MDCAT का जो syllabus है वो काफी extensive होता है और NUMS का जो syllabus है वो उससे it's a tad bit shorter than the MDCAT syllabus. कुछ chapters हो गए जैसे biology में से kingdom animalia हो गया, chemistry में से transition elements, alkyl halides, macromolecules or physical breakdown of modern physics and atomic spectra. These are the topics जो के NUMS में से excluded हैं. But do you guys know the reason why I'm mentioning these topics right now? Actually, the thing is, अगर आप लोग NUMS की website पे जाओ, अगर आप वहाँ पे NUMS 2023 का brochure check करो, तो उस पे it's clearly mentioned कि do not strictly adhere yourselves to the given syllabus. तो इसका क्या मतलब है? इसका simply मतलब ये है कि just like last year MDCAT में हमारे साथ हुआ था, कुछ questions जो थे वो out of syllabus भी आए थे. तो you can definitely expect कि NUMS भी इस साल शायद कुछ क्वेश्चंस जो है वो ऑफ टॉपिक्स दे. आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलूंगा बट ऑफ टॉपिक्स मैं कह सकता हूँ कि शायद कुछ क्वेश्चंस आपके पास आए. तो मेक श्योर जब आप रिवीजन कर रहे हो अपना इन दीस 3 days के तो मेक श्योर कि आप इन टॉपिक्स को भी थोड़ा सा रिव्यू कर लो, थोड़ा सा गो थ्रू कर लो. ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो होगा, सिंस द MDCAT इज आल्सो अराउंड 10th of September को है, तो ऑब्वियसली बात है पढ़ा हुआ तो होगा आप लोगों ने. तो जस्ट मेक श्योर कि उसको भी थोड़ा सा रिव्यू कर लो, थोड़ा सा गो थ्रू कर लो, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो 100% हो जाए, इनफैक्ट 110% हो जाए, कोई भी लूप होल्स ना बचे. ठीक है, तो ये तो सिलेबस की बात हो गई. थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं कि वेटेज की जो डिवीजन है वो किस तरह से होती है. एज जैनब ने थोड़ा सा अभी ओवरव्यू दिया था, तो मैं थोड़ा सा उसकी डिटेल में बात कर लेता हूँ. So basically, what NUMS has decided to do this year, it's pretty much the same from last year. So what the division is, the paper is divided into 2 parts. It's the first part being the part A and the second part being the part B. First part में we have the 95. First part basically carries the 95% weightage of the exam, जिसमें we have a total 150 questions. और अगर like हम subject wise division की बात करें तो we have biology section जिसमें 35% weightage होगी. And then we have chemistry and physics, which hold 25% weightage each. And then we have the English wala section, just key weightage होगी, that is going to be 10%. Surprisingly, there is no logical reasoning or logical reasoning to replace करने के लिए. They have come up with this psychological test. They have come up with this new thing called the psychological test, जिसमें होता ये है कि it basically carries 5% weightage. लेकिन interestingly, it does not carry any marks. Basically, you will be given a test जिसमें आपको 100 questions solve करने होंगे inside 30 minutes, and they will, as Zainab mentioned, तो उसमें वो आपका उसमें आपको mindset check करेंगे कि आप pressure situations में किस तरह से react करते हो. उसके कोई marks नहीं होंगे. They just want to see कि आप किस तरह से react कर रहे हो and what's your state of mind at the moment. So yeah, you just need to pass that portion, और उसमें कोई marks नहीं होंगे, just pass it and you're good to go. ठीक है. अच्छा, as I mentioned earlier कि मुझे थोड़ी technical side of the exam पे बात करनी है. तो for that reason, I'll be talking about the public versus private sectors. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि public versus private sector की मैं यहाँ बात क्यों कर रहा हूँ, अभी तो एग्जाम हुआ भी नहीं है. Why am I already talking about this? तो the thing is, जब हम एग्जाम देने जा रहे होते हैं, this is my personal experience. जब मैं लास्ट ईयर एग्जाम देने जा रहा था तो I had absolutely no clue कि मुझे पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करना है NUMS के थ्रू या फिर मुझे प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करना है. तो एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन आफ्टर द एग्जाम, क्योंकि जब आप आप एक्चुअली रिसर्च करते हो जाके आपको पता चलता है कि ओके दीज आर द कॉलेजेस जो कि पब्लिक सेक्टर में आते हैं, दीज आर द कॉलेजेस जो कि प्राइवेट सेक्टर में आते हैं. तो थोड़ी सी फिर वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है. दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एग्जाम डे से पहले ही पता हो
कि मुझे किन कॉलेजेस में अप्लाई करने हैं, so that you can walk into the exam center with the right mindset. आपको पता हो कि हाँ, okay, this is my target and I need to, give my exam to, मुझे उसी तरह से अपना एग्जाम देना है ताकि I can get into this, I can get into, these respective universities. So now question arises कि NUMS के अंडर कौन सी यूनिवर्सिटीज लाई करती हैं जो कि प्राइवेट हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज जो लाई करती हैं जो कि पब्लिक हैं. So as we all know कि PMDC का जो हम MDCAT देने जा रहे हैं, PMDC has a lot of universities जो कि पब्लिक हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर में आती हैं, जैसे कि we have Dow Medical College, I'm talking about Sindh right now, Dow Medical College, we have SMC, we have KMDC, and then अगर आप पंजाब की बात करो, you have Allama Iqbal Medical University, and then you have King Edward Medical University. A lot of universities are there. And then there's another branch of universities जो कि PMDC के अंदर आती है, that is the private branch, जैसे कि उसमें ATU आ गया, Ziauddin आ गया, and then we have universities like Bakai Medical College, we have UMDC, United Medical College, a lot of universities. So यही same division we can expect from NUMS as well, right? But the thing is NUMS का जो division है थोड़ा सा different होता है. NUMS में we have only one university जो कि public sector में आती है, and that is the Army Medical College Rawalpindi. उसमें and then उसके अलावा जितनी भी universities हैं all over पाकिस्तान जो कि NUMS से affiliated हैं, जैसे कि CMH हो गई, हाईटेक हो गई, किम्स हो गई, फजाइया, रूट, फाओ, all these universities, they are all private. ठीक है ना? No other university comes under the branch of private, comes under the branch of public sector. So now that we know कि कौन सी universities जो लाई कर रही हैं वो public हैं और कौन सी universities जो हैं वो private हैं, let's talk about the seat distribution कि कौन सी universities की कितनी seats हैं, तो so that we know कि हम उसमें apply कर सकते हैं नहीं. Again, वही वाली बात कि this is very important to know prior to the exam, just as it is to know, after the exam, क्योंकि ताकि आपको पता हो कि like you can walk into the exam center with the right mindset. Yeah, okay, this is the score I need to get ताकि मैं these universities में apply कर सकूँ, right? So let's talk about the public sector first. And as I mentioned earlier, AMC Army Medical College, it's the only university affiliated with NUMS जो कि public sector के अंदर आती है. So talking about the seat distribution, there are 55 seats जो कि AMC में है, जो कि public sector में आती हैं all over Pakistan, right? उसके अंदर further division अगर हम देखें तो 40 seats जो होती हैं वो NUMS candidates की होती हैं, and then we have 15 seats जो कि foreign candidates की होती हैं. But again, foreign candidates, let's say अगर आप उनको local candidates से compare करो तो they don't have scores that are comparable to the local candidates. For that reason, हर साल ऐसे ही होता है कि जो foreign candidates की seats होती हैं वो भी जो है local candidates ही ले जाते हैं, वो reserve कर लेते हैं. So you can consider कि हमारे पास public seats होती हैं AMC में, they are a total of 55 seats. ठीक है. उसके अलावा as I mentioned, बाकी सारे colleges जो हैं वो private के अंदर आते हैं. कोई भी कॉलेज ले लें आप, CMH हो गया, हाईटेक हो गया, किम्स हो गया, everyone comes under the branch of private sector medical colleges. So yeah, उनकी seats भी सारी जो है वो private के अंदर आती हैं, and there are a lot of seats आप लोग like उसमें apply कर सकते हो. ठीक है. Now that we are done talking about the seat distribution, let's talk about who can apply in these colleges, right? अब एक हर साल एक थोड़ी सी confusion ये rise होती है कि फलां प्रोविंस का बच्चा फलां प्रोविंस में अप्लाई कर सकता है, या सिंध का बच्चा पंजाब में अप्लाई कर सकता है, या फिर पंजाब का बच्चा वो है KPK में अप्लाई कर सकता है नहीं. The thing with private medical colleges is that they do not require NUMS, right? What they do require is that you need to be a citizen of Pakistan. You need to be a Pakistani national. Even if you are dual national, you still need to be a Pakistani national ताकि आप किसी भी private medical colleges में अप्लाई कर सको. And that's the same case for NUMS as well. NUMS के जितने भी private medical colleges आते हैं उसमें उनमें आप apply कर सकते हो if you are a Pakistani national. All you need to do is जब आपका exam हो जाए उसके बाद NUMS opens a portal जिस पे you can enter your MDCAT score, उस पे you can enter your NUMS score, you can enter your FSC, and then you can enter your metric score as well. And then what it does is that it gives you a list of all the medical colleges जिसमें आप अपनी preference के according, let's say you can select 3 or 5 maybe, I don't know what they're going to do this year, but usually 3 होते हैं. So and then what happens is कि जितने भी students ने like let's say AMC की सबसे ज़्यादा preference रही, and then second पे CMH आ गया, and then उसके बाद हाईटेक आ गया. Now इन 3 कॉलेजेस की सबसे ज़्यादा प्रेफरेंसेस रहेंगे, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इन 3 कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट जो है वो टॉप पे आ जाएगी, एंड देन उसके बाद
according to the preference of the students, जो के students select university, उनकी merit list उससे नीचे आती जाएगी. So it's all about the preference of the students. उसी हिसाब से फिर merit list बनती है. ठीक है. And again, I'm repeating कि आपको all you need to be is a resident, is a citizen of Pakistan, and then you can apply in all those universities. ठीक है. And then you can, and they'll call you according to your merit. Acha, another thing, what NUMS does is that it basically makes the merit list of all the universities. कोई भी university independently अपनी merit list नहीं बनाती. NUMS is responsible for that. NUMS सबकी merit list खुद बनाती है, and then it forwards the merit list to them, and then आपको वो call करते हैं, and then you can see अगर आपको admission लेना है या नहीं. That's completely up to you. Now, the last thing that I want to talk about is pretty important as well. Is your what's the score that you should be targeting, right? Exam देने से पहले a question comes into everyone's mind कि यार मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, कौन सी कितना स्कोर चाहिए फला यूनिवर्सिटी में अप्लाई करनी है. लेट्स से अगर मुझे आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम डाउ, तो मुझे एग्जाम से पहले मैं यही सोच रहा था कि यार मुझे MDCAT में कितना स्कोर चाहिए so that I can get into डाउ, right? तो same thing with NUMS. Before you go into the exam, आपको पता होना चाहिए कि let's say अगर आपको AMC में admission लेना है, तो you need a certain score ताकि आप AMC में admission ले सको. As I mentioned, कि AMC में 55 seats हैं, and the number of applicants of NUMS, you can only imagine काफी ज़्यादा होने वाले हैं. तो obviously बात है, competition is going to be really high. So you need to make sure you're well prepared and you're well revised and you give your exam well ताकि आपकी जो aggregate है that falls into the right category और आप जो है AMC में apply कर सको. And that being said, कि it does not mean कि private की जो merit list होगी वो it's going to be anything shorter than the AMC वाली merit list. क्योंकि होता ये है कि last year मुझे याद है CMH की जो merit list थी that was around 89 to 91%. So you can only imagine कि उसकी भी मेरिट लिस्ट काफी उसकी भी जो मेरिट कट ऑफ होता है वो भी काफी हाई होता है. तो फॉर दैट रीजन अगेन वही वाली बात कि इट्स द ऑल ऑफ दिस स्टफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोन बिफोर द एग्जाम ताकि आपको पता हो कि ओके यार इतना मेरिट मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए, इतना मेरिट मुझे टारगेट करना चाहिए ताकि मुझे इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, राइट? आई होप यू ऑल आर very enthusiastic regarding getting into your favorite medical university. So that is why I want to make sure कि आप लोगों को ये सब चीजें पता हो ताकि आप लोग जो हो so that you can walk into the exam with the right mindset कि हाँ यार मुझे इतना स्कोर टारगेट करना है नम्स में ताकि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके. ठीक है, तो ये सब तो हमने जो है ऑल दी टेक्निकल स्टफ डिस्कस कर लिया. नाउ आई जस्ट वांट विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक. ठीक है ना? इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. कोई मुश्किल नहीं होता नम्स, राइट? NUMS is a very easy exam. Last year मैंने खुद दिया था. It's just conceptual. It's very straightforward. कोई technical stuff नहीं पूछते. ना कोई लंबे चौड़े formulas नहीं पूछेंगे आपसे वहाँ पे. It's very straightforward. It's very it's very easy. कोई इसमें it's very conceptual exam. You just need to keep calm. Hold your nerve, and that's all that matters, and that should get you through. So yeah, best of luck, guys. And yeah, that's it from my side. Over to you, Dulba. Thank you so much, Hassan. Thank you so much for such brilliant and amazing tips. I'm sure everyone out there was nervous and you brilliantly answered their questions. I'm sure if I had you in my time, at the time, Bashada, I would have been less stressed by hearing to these tips and tricks. So thank you so much for guiding everyone out there. Okay, so now I am going to be telling you about a few resources for the NUMS test, जो कि आप अपने आखिरी few days में access कर सकते हैं in order to ace your NUMS exam. सबसे पहले तो I will be telling you about the MedAngle Premed learning list. What are these learning lists? I know that हमारी टेक्स्ट बुक्स में numerous scientific contributions मौजूद होती हैं, numerical values होती हैं, जिनको highlight करते करते it's like our entire book is different types of colors. तो इसको prevent करने के लिए MedAngle Premed has compiled a list of numerical values and scientific contributions from different boards of Pakistan. And like Hassan and Zainab has previously emphasized, NUMS ज़्यादातर आपका फेडरल और पंजाब पे फोकस्ड होता है. So yes, we do have Punjab and federal board learning list with us, जिसमें you have for chemistry, physics as well as biology. So guys, I'm telling you, this is the perfect tool that you need in these last few days in order to ace your exam. What more than having all those highlighted points in a single place in the form of a PDF? So do not wait and get access and get your hands
on this learning list, as this is a very nice tool for you to ace your exam. In addition to this, I would also highlight other types of resources that can be of great help in order to ace your NUMS exam, जिसमें हम लोग के पास आता है MedAngle Premed का YouTube channel, इसके अलावा MedAngle Premed की review guides as well as उनके formula sheets. So first of all, let me tell you about the MedAngle Premed YouTube channel. Are we all not looking for lecture videos? So yes, MedAngle Premed brings you lecture videos. आपको 2 to 3 minutes की बहुत ही short videos मिलेंगी where you will be able to answer all the different questions running into your minds. इसके अलावा आपके जितने भी concepts हैं, they will be cleared. And I should inform you that this has been verified by experts. It has been solved by students from top merit colleges of Pakistan. Therefore, you need not worry about anything and just subscribe to our YouTube channel in order to gain access to numerous videos and stay updated for future as well. इसके अलावा we also have review guides at our MedAngle Premed where these review guides are going to guide you on how to prepare for your NUMS exam. अब what are these review guides about? These review guides, like I said, इसमें आपके पास summarized tables मौजूद होते हैं. We have well labeled diagrams. We have different types of contributions, different types of numerical values mentioned in these particular review guides, and review guides exist for our chemistry, biology, as well as physics. So it is very important for you to gain access to these review guides. And guys, let me tell you, absolutely free. What more than gaining access to these absolutely free review guides? In addition to this, we also have a physics formula sheet. Again, physics formula sheet, I'm sure it's something that we must consider as a treasure. आपकी पूरी physics की book में से किसी ने आपको different formulas extract करके एक PDF बना दी है, and it is such a time saver as well as a life saver when you are appearing for your NUMS MDCAT. So for your easy access, हमने next slide पर attach की हुई है QR codes, और आप इन QR codes को scan करें right now. Do not miss out on this. I'm telling you, this is the perfect tool in these last 3 days to ace your NUMS exam. So review guide का आपके पास QR code और formula sheet का QR code available है. Get your hands on these QR codes. Get your hands on these review guides and formula sheet. They are at your doorstep, waiting for you to access them. So I think that's it for the different types of resources that we have to offer. And Zainab has previously mentioned, we have NUMS past papers, we have mock exams for real life exam conditions, जिसके through आप अपने आप को manage कर सकते हैं. Now, moving forward, like I said, we have prepared for you a live Q&A session. So in this live Q&A session, we will be answering your burning questions, and anything that you all need, you can just add it on our chat, और फिर हम वहाँ पर उन questions को read out करके, of course we have Mohammed Hassan and Zainab Infal with us. They are more than happy to help you. So I am going to be reading out the questions for Mohammed Hassan and Zainab Anfal, जो कि हमारे मुख्तलिफ किस्म के viewers ने present किए हैं, और फिर हम इन questions को answer करेंगे. So first question that I would like to ask Mohammed Hassan is, somebody is asking, NUMS में physics के MCQs conceptual होते हैं? Yes, NUMS में physics के questions जो होते हैं, they are heavily conceptual. Even more than the MDCAT actually. मैंने दोनों exams दिए थे last year, and what I personally felt was कि NUMS का जो exam था, that was far more conceptual than the MDCAT exam, and that is something that actually made it easier as well. जितना ज़्यादा exam conceptual होता है, it actually becomes more easier. ठीक है ना? तो yeah, it is काफी जो है conceptual part questions आते हैं physics में. थोड़े बहुत questions होंगे, you can expect जिसमें वो like direct formulas वगैरह पूछ लेंगे, या फिर थोड़े से numerical based आ जाएंगे, but 90% of the questions from physics are going to be conceptual. Okay, yes, thank you Hassan for answering that question. अच्छा, next question, that is also a very common question asked by everyone. It is कि revise करने में सब कुछ हमें बहुत ज़्यादा time लगता है, and the person is saying कि we want to focus more on FLPs. So according to them, how do I revise quick and practice more? So Zainab, do you have something to say about this? Yes, obviously आपको जो है in last 3 days में obviously किसी के पास इतना time नहीं होता कि वो सारी टेक्स्ट बुक से go through करे. तो आपको जो है ये करना चाहिए कि आपको NUMS के पास पेपर्स जितने भी हैं वो सारे आपको प्रैक्टिस करने चाहिए. और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप जो है प्रीमेड बाय MedAngle ओपन करें. हमारे पास हाई यील्ड स्मार्ट सेट्स हैं, वहां से जो है आप उस टॉपिक के MCQ से प्रैक्टिस कर सकते हैं. और अगर आपको कोई फॉर्मूलाज या कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना है तो जो रिव्यू गाइड्स हैं
वो उसके ड्राइव को आप ओपन करें, जिस भी चैप्टर के आपको फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है वहां से इजीली आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आई गेस इन 4 रिसोर्सेज जो रिव्यू गाइड्स हैं, लर्निंग लिस्ट हैं, फास्ट पेपर्स और मॉक एग्जाम्स वगैरह, इनसे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी और वो भी कम टाइम में। ओके, थैंक यू सो मच ज़ैनब। अनदर क्वेश्चन दैट वी हैव इज कि मेरा अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, प्लस एकेडमी में मॉक्स में बहुत लो स्कोर्स आ रहे हैं, सो आई थिंक दिस पर्सन नीड्स समथिंग रियली मोटिवेटिंग इन ऑर्डर टू कीप देम गोइंग। सो हसन, डू यू हैव एनीथिंग मोटिवेटिंग टू से टू दिस पर्सन? Yes, definitely. देखो, I know so many people जिनके academies में कम scores आते थे, या फिर questions solve करते थे and they couldn't solve them. लेकिन what they had was they believed in themselves. They were confident about themselves, and that is what helped them. जब वो exam देने गए, they were confident and they actually ended up cracking the paper. क्योंकि अक्सर होता ये है कि हमारी जो academies में हम paper solve कर रहे होते हैं, वो actual MDCAT या फिर actual NUMS के exam से काफी different होते हैं. So you can expect कि आप maybe your academy is making the exams a bit tougher, या फिर थोड़ा सा maybe they're making it out of syllabus या फिर थोड़ा सा different बना रहे हैं, but the actual exam it might actually come out to be easy for you. So I just want to say कि be confident in yourselves. ठीक है ना, जितना भी time है आपके पास, make sure कि आप उसमें revise कर रहे हो. If you wanna what I would suggest कि आप कोई नई चीज ना पढ़ो अभी, क्योंकि let's say अगर आपका syllabus नहीं complete हुआ हुआ, तो I don't think it's the right time कि आप कोई नई चीज खोल के बैठो, because that's gonna make you further panic. अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप और पैनिक हो गए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और शैटर होगा. तो मेक श्योर कि आप कोई नई चीज ना पढ़ो, जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, और उसके अलावा इफ यू कैन सॉल्व एनी पास्ट पेपर्स वगैरह वो सॉल्व करो. एंड या if you are not able to solve those past papers, then just don't lose confidence in yourselves. The least thing and that's the least thing you can do. At least be confident in yourself, go to the exam center and just try to do the best you can, and just hope that it works out. And honestly, I know a lot of people jinka ho gaya tha, so like don't worry, it's going to be better than you're expecting it to be. Thank you so much, Hassan. That was quite motivating, I must say. Another question for you, Zainab Infal, like we mentioned कि NUMS में अब से 3 दिन बाकी हैं. So what would you like to say कि in last few days में what preparation strategies should be adopted? This is a question coming from another person. अच्छा, इस लास्ट डेज में आपको ये करना चाहिए कि जितना आपने पढ़ा है उस सबको आपको रिवाइज करना चाहिए. अभी न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से क्या होगा कि जो चीजें आपने पहले पढ़ी हैं वो भी आपको सही से याद नहीं होंगी, और जो न्यू चीजें आप पढ़ोगे ऑब्वियसली वो भी आपको सही से क्लियर नहीं होगी. तो जैसे पिछला क्वेश्चन था कि हमने जो है पूरा सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा, तो हमें क्या करना चाहिए. तो इस टाइम में बेस्ट ये होता है कि आपने बस जितना पढ़ लिया है उसको दोबारा आप गो थ्रू करो, उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, उसी से रिलेटेड आप मॉक्स वगैरह करो, ताकि एटलीस्ट जो आपने पहले किए वो तो आपका 100% हो जाए ना, ताकि अगर उस टॉपिक से कोई एमसीक्यूज आ रहे हैं तो उनको आप 100% करेक्ट मार्क कर सको. Okay, yes. Thank you so much, Zainab. Another question for you, Hassan. That is, can you guide a little about organic chemistry? कि किस तरीके से in last few days में we should be handling organic chemistry? अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली इट लुक्स वेरी स्कैरी. आई डू अग्री, मुझे भी काफी थोड़ा सा देख के खौफ सा आता था कि यार कैसे होगी इतनी सारी. बट अगेन, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर योर नम्स एंड योर एमडीकैट, अगर आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ा है, रिवाइज किया है, तो डोंट वरी अबाउट इट. जस्ट आपके पास 3 दिन है, तो इफ यू हैव, अगर आपकी केमिस्ट्री का रिवीजन बाकी है, तो जस्ट गो थ्रू इट, लाइट रिवीजन करो. Don't, again वही वाली बात, do not study anything that is new to you. कोई नया कॉन्सेप्ट मत खोल के बैठ जाओ, कोई नया टॉपिक मत खोल के बैठ जाओ. जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करो. एंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एक्चुअली नॉट दैट हार्ड, सरप्राइजिंगली. ये चीज मैंने नम्स में भी नोटिस की थी, ये चीज मैंने एमडीकैट में भी नोटिस की थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सवाल आते हैं वो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल सवाल आते हैं. बिकॉज एग्जामिनर दे नो कि आप कोई बहुत कोई पीएचडी लेवल स्टूडेंट नहीं हो, उनको पता है कि आप जस्ट एमडीकैट लेवल स्टूडेंट हो, तो वो आपसे क्वेश्चंस भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं. जो बुक में चीज अवेलेबल है वही पूछेंगे, कोई बाहर की चीज नहीं आ जाएगी. तो या दे आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस इन द एग्जाम वो ऐसे होते हैं कि आप उनको द मोमेंट यू रीड द क्वेश्चन, आपको आंसर उसका राइट अगर आपके दिमाग में आ जाता है, आपको पता चल जाता है ओके दिस इज अ लाइन फ्रॉम द बुक, इसमें भी यही था और इसका आंसर यही होना चाहिए, एंड दैट्स इट. ज्यादा से ज्यादा आपको 20 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में. तो या जस्ट उसका लाइट रिवीजन करो,
कोई नई चीज नहीं पढ़ो, and yeah, don't worry, it's like very simple, काफी straightforward question आता है organic chemistry में, so it's not that hard. Thank you so much, Hassan. Okay, one more, and I think I will be taking this last question. Somebody is asking कि NUMS में हमारे पास जो past papers होते हैं, तो कितने chance होते हैं कि the past paper questions are repeated? Zainab, could you answer that? अच्छा, नम्स में बल्कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में ये होता है कि वो हर दफा ऐसे नहीं कर सकते कि पूरा जो है अपना एमसीक्यू बैंक चेंज कर दें। ऑब्वियसली आपके पास पेपर से जो है एमसीक्यू जो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। अब फिजिक्स के फॉर्मूला से रिलेटेड या रिलेशंस लिंक करने से रिलेटेड, या कोई आपके जो है इंग्लिश में ग्रामेटिकल स्टेटमेंट वाला एमसीक्यूज होगा, वो एमसीक्यू रिपीट होते ही होता है। और नम्स में तो ऑब्वियसली जो है, अगर आप 2021 और 22 इनका तो आपने पास पेपर जरूर करके जाना है, क्योंकि जब एमडी नम स्विच किया था 200 एमसीक्यूज पहले होते थे उसमें, फिर 150 पे स्विच कर गए थे वो। तो जो 150 एमसीक्यूज वाले पास पेपर्स हैं वो आपने जरूर प्रैक्टिस करना है उससे। मैंने भी जो प्रैक्टिस किए थे, तो हमारे जो है फेडरल और पंजाब की जो बुक्स हैं, उससे कोई स्टेटमेंट थी बायोलॉजी में जो कि पुराने एडिशन से थी, न्यू एडिशंस में वो डाटा नहीं गिवन था, तो वो पास पेपर में मैंने सॉल्व किया था और मुझे करेक्ट ऑप्शन का पता था, और वो हमारे जो है एग्जाम में आया हुआ था, तो फिर वो सही मेरा मार्क हो गया। तो ऑब्वियसली रिपीट होते हैं एमसीक्यूज, अगर कम से कम भी कहें तो आई गेस 5 से 6 तो रिपीट होंगे। Okay, that's a pretty nice number, because एक number भी I'm sure it matters a lot आप जब किसी NUMS या MDCAT एग्जाम में अपेयर हो रहे होते हैं। So another question that I would like to ask is that one of our viewers is asking कि एग्जाम सेंटर में एंटर होता है and it's quite exhausting. आप किस तरीके से in those time period, how should you be tackling your nerves? So Hassan, would you like to add a few words onto this? Yeah, I will definitely. It's a very good question, and इसका जो simple solution है ना, that is कि आप exam center पे you need to reach at least an hour prior to the exam. Let's say अगर आपको exam सुबह 9 बजे, तो make sure कि आप सुबह 8 बजे exam center पहुंच जाओ। उससे होता ये है, what it does is कि it allows you to get well acquainted with the exam center. अक्सर बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा क्राउड देख के थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, या फिर इतना बड़ा एग्जाम सेंटर देख के थोड़ा सा उनको थोड़ा खौफ होता है कि यार ओके दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। बट अगेन वही वाली बात, आप थोड़ी देर वहां पर यू स्पेंड टाइम, आप अगर एक आधा घंटा वहां बैठते हो तो यू जस्ट गेट होल्ड ऑफ योर नर्व्स, आपकी योर हार्ट बीट अगेन गोज बैक टू नॉर्मल, एवरीथिंग सीम्स फाइन अगेन, एंड वही बात है कि यू जस्ट गेट अक्वाइंटेड टू द एग्जाम सेंटर, एंड या after that it's just fine. So yeah, make sure कि आप exam center पे you're reaching at least 1 hour prior to the exam. That is the perfect solution. Okay, thank you, Hassan. So I will be taking this one last question before we race towards the end of this session, and that question is it possible to score good in NUMS if we have studied from Sindh board books with reference to MDCAT? Would you like to say something about it, Zainab? Yes, obviously. इसमें ये है कि नम्स जो है वो जो डाटाबेस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे बायोलॉजी के आप केमिस्ट्री और इंग्लिश और फिजिक्स तो आप कर लोगे स्मूथली, क्योंकि उसमें फिजिक्स में ये होता है कि वो फॉर्मूलाज के रिलेशंस और लॉज वगैरह से दिए हुए होते हैं, तो वो तो हर टेक्स्ट बुक में कॉन्सेप्ट्स वगैरह सेम है। और उसके बाद केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में हमारे पास ट्रेंड्स वगैरह एनॉमलीज वगैरह वो भी हर टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जाती है, और ऑर्गेनिक के रिएक्शन भी मोस्टली सेम होते हैं। वैसे पंजाब में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है बहुत डेप्थ में डाटा गिवन है उनका, और जो बायोलॉजी है उसमें वो मैक्सिमम फेडरल और पंजाब से देते हैं। अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को सेंस से कर रहे हो तो आपको बायोलॉजी जो है मैं कहूंगी कि फेडरल की तो जरूर रीड करनी चाहिए। Thank you so much, Zainab. Thank you so much, Hassan, for such detailed answers. कि आपने हमारे viewers को बताया about the different aspects of NUMS. It was literally wonderful hearing you all. And of course, guys, we time बहुत कम होता है and we have to end this live session. लेकिन our guidance groups are always open to questions. It is always open to any type of questions that you all want to ask. And of course, हमारे top merit students, they will be more than happy. They'll welcome you, more than happy to answer
to all your burning questions. So if your questions weren't answered in this live, then there is nothing to worry about, because like I said, it is a live series. We will be conducting different lives now and then, so you should stay tuned. And for that, you of course need to follow us on our socials. So now I'm going to tell you about the different social media platforms that we have and that you must follow. First of all, हमारा Instagram है. We are also on Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, Twitter, you name it, and you'll get MedAngle Premed there. So if you have any questions, you can send it there. And like I said, future may we have a lot planned for everyone, not only related to NUMS, but also related to MDCAT. So if you have any questions or any resource that you are looking for, and since MedAngle Premed is absolutely free, so it is the perfect platform जिसको आप access करें in order to calc ace not only your NUMS exam, but also your MDCAT. So that brings us towards the end of this live session. It was lovely hearing Zainab and Hassan share their experience with all of you, and it was lovely having all of you join us. We at MedAngle Premed wish you all good luck for your upcoming NUMS exam, and we hope that you all ace your exam, and we are here with you throughout this journey. So do not worry with us. Have a great time. Good luck for your NUMS exam.